Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on postmodern writers and today we will talk about Graham Swift. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Nishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening, Cherry. Welcome. And these are the timings of the classes Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications. Good evening, Meet. Good evening, Shupriyo. Welcome. Good evening, Shushmita. Welcome. So those of you who are watching this video, please like and share. Okay, so today our topic is Graham Swift. So don't confuse between Graham Swift and Graham Greene. Both are different novelists. We have already discussed Graham Greene's novel in detail. And today we will talk about Graham Swift. Okay, so basically he is a postmodern writer as mentioned in the title. So Graham Swift 1949 to present is his timeline. Graham Swift का एक ही novel सबसे ज़्यादा discuss होते हैं, that is Waterland. But definitely we will talk about other novels. In today's class we will cover 6 important novels written by Graham Swift. Okay, so let's start with his biographical details. Graham Swift was born on 4th May 1949 in London and he was acquainted with Ted Hugh, great friend of Ted Hugh. He was educated at Dalwick College in London and Queen's College in Cambridge. दोनों ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की. He also studied at University of York and he won various awards including Booker. ओके ही ओन वेरियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग बुकर. तो बुकर प्राइज उनको किस लिए मिला था हम आगे बात करेंगे. ओके सो दैट इज अबाउट हिज बायोग्राफिकल डिटेल्स. ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस एक जानने के लिए, एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया. नाउ वी डायरेक्टली मूव ऑन टू हिज नॉवेल्स. नॉवेल में भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है बिकॉज ही इज वेरी लेस डिस्कस्ड. अगर आप लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर बुक्स में भी देखो तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ज्यादातर बुक्स में होता नहीं है और अगर होता है तो उसमें बहुत ही कम डिस्कशन होता है. मेजर डिस्कशन है ऑन विलियम गोल्डिंग एंड अदर राइटर्स, बट दीज राइटर्स ग्राहम स्विफ्ट, पीटर एक्रॉयड, हिलरी मैंटेल एंड ऑल्सो द अदर सम अदर पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट जिनके ऊपर डिस्कशन बहुत कम है. तो मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है. सो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. Okay, so let's start with Graham Swift's novels. The first novel which we are going to discuss, that is The Sweet Shop Owner, published in 1980. Sweet Shop Owner. Okay, so Sweet Shop Owner, it was set in a sunny Friday in June 1974. That is the setting. And who is the shop owner? Shop owner का जो नाम है वो है Willie Chapman. तो character का नाम important है because in your net exam ऑफन टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टर के साथ नॉवेल को मैच करना. ठीक है, तो उसमें कोई कुछ लेसर नोन कैरेक्टर्स एंड लेसर नोन नॉवेल्स आर आल्सो गिवन. गुड इवनिंग राजकिशोर, वेलकम. तो दैट इज व्हाई ग्राहम स्विफ्ट एज बहुत ही कम डिस्कशन होता है तो इसके नॉवेल के आने के चांसेस हैं. Okay, so the owner is Willie Chapman. He is the sweet shop owner. His wife Irene gives him a daughter Dory. Okay, Irene gives him a daughter Dory. They have a condition that they will never express love for each other. This is a very interesting kind of conjugal life where his wife Irene has delivered a daughter, but they have made a pact. They have made a condition that they will never express love for each other. They will never express some kind of physical belongings, physical longings for each other. And on that condition, their daughter is delivered. Yes.
So, and it basically talks about the last days of Willie Chapman, how he spent the last days of his life. That is the main plot. And he tries to justify his act by an internal monologue. So basically, the whole novel is structured as an internal monologue. It is not exactly autobiography. ठीक है, तो विली चैपमैन वो अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहे हैं एंड किसको वो ये कन्फेशन दे रहा है, टू हिज डॉटर डॉरी। तो डॉरी को ही वो बता रहे हैं अबाउट his act, the justification of his act in an internal monologue. Good evening, Papri. Welcome. So that is about the first novel of Graham Swift, that is The Sweet Shop Owner. Okay. Good evening, Vishal. Welcome. तो ये था उनके पहला नॉवेल। नाउ वी मूव ऑन टू हिज नेक्स्ट नॉवेल, दैट इज शटलकॉक। Very interesting title, Shuttlecock, published in 1981. Now, what about Shuttlecock? Shuttlecock is a kind of psychological thriller. Okay, तो इसलिए important है, and also remember it won Geoffrey Faber Memorial Prize in 1983 and it was also made into a film in 1993. ठीक है, so psychological thriller, तो किस टाइप का थ्रिलर है हम देखते हैं। तो the main character of this novel, Shuttlecock, is Prentice. तो Prentice, it is a kind of, आप कह सकते हो कि modified version of Apprentice। तो Apprentice से ये Prentice नाम लिया गया है, but Apprentice is the name of a post, but Prentice here is the name of the character। तो प्रेंटिस एक अप्रेंटिस की तरह ही काम करते हैं। ही इज द जूनियर असिस्टेंट इन द डेड क्राइम्स डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस आर्काइव्स इन लंदन। दैट वाज हिज जॉब, डेड क्राइम्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली जो फॉरेंसिक टीम होता है उसके साथ थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज है। सो डेड क्राइम्स डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस आर्काइव्स इन लंदन। सो प्रेंटिस वर्कड एज एन अप्रेंटिस एज अ जूनियर असिस्टेंट in that particular department. Now, his life is very traumatic as it's a psychological thriller, तो psychological trauma तो definitely होगा, ठीक है। तो he was gradually alienated from his wife and children and he faced a lot of dilemma inside his own mind. And he is writing his memoir. वो अपना memoir लिख रहा है, that is actually this particular novel. Now, in his memoir, he describes that his father is in hospital due to some kind of serious disease, and he is also very much disturbed for that. So, on the one hand, he is disturbed by the illness of his father, and on the other hand, he is disturbed by the loneliness, the way he is gradually alienated from his wife and children. Now, in his office, he is also not happy because he suspects Quinn, his boss, for hiding some crucial files. He suspects that his boss is the main culprit. He has hidden some kind of crucial files. And the files are very important because it is about his friend who is betrayed by his father. Okay, so he is investigating the betrayal case of his own friend and he can't find out the files, and he suspects that it is actually Quinn who hides those crucial files. Now, those files are evidences that his father is not a hero of Second World War. तो कुछ false documents है वहां पर जिसको prove करने का एक मौका उनको मिल रहा है, but the files are missing. तो उस फाइल में क्या है, those files are evidences that his father has not served anyway during the Second World War, but he claims to do so, and in that case he betrays his own friend. Now, finally, Quinn is going to retire, and when he is going to retire, he gives Prentice some kind of condition, and he asks Prentice whether he should destroy the files or not. ठीक है, वो प्रेंटिस को ये पूछ रहा है कि whether he should destroy the files or not, and also he gives the condition that if Prentice agrees to destroy the file, then he will be given the promotion as the next boss of the company. ठीक है, तो उनको एक ब्राइब दिया जाता है, एक मतलब लियोर कर रहे हैं this particular man, the boss, and he says that if you agree with me to destroy all those secret files, then you will receive the position of boss.
Okay, so Prentice agrees and finally he receives his promotion. And it was later revealed that Prentice's father worked as a spy in Nazi occupied France. So he was not basically a soldier, but he worked as a spy in Nazi occupied France. And finally, Prentice is modifying his version of story. Why? Because जो स्टोरी वो लिख रहे थे अबाउट द मिसिंग ऑफ दोज फाइल्स एंड वो अपने बॉस को गिल्टी मान रहे थे बट अभी तो बॉस ने उनको प्रमोशन दे दिया है सो इसी वजह से वो क्या कर रहे वो अपने स्टोरी को मॉडिफाई कर रहे तो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ स्टोरी विद इन अ स्टोरी जैसे हमने प्ले विद इन ए प्ले पढ़ा था वैसे ही एक स्टोरी विद इन ए स्टोरी है कि एक स्टोरी तो ग्राहम स्विफ्ट हमको कह रहा है अबाउट प्रेंटिस एंड इनसाइड दैट नॉवेल प्रेंटिस इज राइटिंग हिज ओन मेमोयर उसमें प्रेंटिस अपना स्टोरी बता रहे सो पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल एंड ऑल्सो नॉट ऑटोबायोग्राफिकल एक्चुअली पार्टली बायोग्राफिकल इसमें प्रेंटिस अपना बायोग्राफी बता रहे हैं ठीक है तो एंड ऑल्सो इट इज some kind of story within a story. Yes, it suggests that history is also recreated and modified absolutely according to the need of powerful person. Yes, so this is very true. This is also happening in today's world that history or any kind of details जो हम पढ़ते हैं, जो information हम पढ़ते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा manipulated होता है by the authority. Not only history but any kind of information. तो अब ये मतलब इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन रहता है कुछ ना कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ ऑथोरिटी यस एब्सोल्युटली राइट तो दिस इज अबाउट शटलकॉक नाउ नेक्स्ट नॉवेल में आते हैं विच इज द मोस्ट फेमस नॉवेल ऑफ ग्राहम ग्रीन एंड ऑफन डिस्कस्ड दैट इज वाटरलैंड ये मैचिंग में भी बहुत आए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो नेट का तो बहुत पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता था मतलब अभी भी आते हैं बट ये वाटरलैंड का ऑप्शन एग्जैक्टली मुझे याद है कि कोई ना कोई क्वेश्चन में मैंने देखा था कि वाटरलैंड इज मैच्ड विद ग्राहम स्विफ्ट तो ये बहुत ही एक पॉपुलर वर्क है जो ग्राहम स्विफ्ट के बारे में हमेशा डिस्कशन होता है So Waterland published in 1983. Yes. So it was set in Fens, East Anglia. So remember the setting, set in Fens, East Anglia. Now, main character is Tom Crick, who is a passionate history teacher. वो हिस्ट्री का टीचर है ठीक है बट हिज करियर abruptly ends after 32 years when his wife steals a baby from local supermarket. So his wife does a wrong thing. Yes, it's very famous. So his wife does the wrong thing. His wife steals a baby from local supermarket and he recalls his past in his last class. So because of this scandal, उनका job अभी मतलब job वो lose करने की जगह में पहुंच गए हैं. His career abruptly ends and in his last class he is recalling his past life before the students. तो वो क्या चीज कह रहे थे कि द फैमिली ऑफ क्रिक द क्रिक फैमिली हैज टू सन्स डिक एंड टॉम वो अपने फैमिली का स्टोरी बता रहा है फैमिली सागा यू कैन से so crick family has two sons dick and tom but henry is actually tom's father and dick's stepfather so dick is not the direct associate of crick family dick is a stepson okay and he is a mentally challenged boy and he is the elder brother of tom crick ओके नेक्स्ट क्या है कि फ्रेडी का कैरेक्टर आते हैं फ्रेडी इज अ यंग फ्रेंड ऑफ टॉम नाउ टॉम्स कैरेक्टर ऑल्सो has gone through a number of transformation or you may say number of obstacles where so Tom flirts with Mary who is very curious about Dick. Tom flirts with Mary but Mary feels curious about Dick who is a mentally retarded boy. Now, Mary teaches Dick how babies are created in a female body. So, very interestingly, Mary treats Dick as a child and she finds interest in Dick's simplicity in that kind of mentally underdeveloped boy. And he teaches that how this whole process is going on. How can a female body procreate, what is the process of carrying the babies and all these things. Now Dick believes that तो ये जो story वो बता रहे हैं actually that is just an example ठीक है but Dick creates a kind of fancy of his own and Dick finally believes that he is the father of that baby ठीक है but Mary tells him that it is Freddie's child तो Mary अब जब उन्होंने देखा कि डिक ये सोच रहा है कि ही इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड नाउ मेरी कांट
टेल हिम दैट नो इट इज जस्ट अ स्टोरी, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो मेरी उनको क्या कह रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए मेरी कह रहे हैं कि नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेडीज चाइल्ड. Now, Dick, as he is mentally underdeveloped, he has no such proper conception of anything. So he kills Freddy out of rage. Okay, good evening, Suman. Welcome. He kills Freddy out of rage. Now, Tom finds when Tom goes to investigate Freddy's body, he finds a deep injury on Freddy's head and tries to find out the cause. उनको सबसे पहले ये नहीं पता था कि डिक किल्स फ्रेडी, बट फ्रेडी उसका दोस्त है, तो वो अपने दोस्त की मर्डर के बारे में जांच करने की कोशिश करते हैं. एंड फाइनली टॉम प्रूव्स दैट डिक इज द मर्डरर. And when that is proved, police comes to arrest Dick, and Dick finally commits suicide. Now, later it is revealed that Mary is actually carrying the child, and he decides to abort the baby with the help of Martha Clay, a local witch. तो जो स्टोरी वो डिक को सुनाए थे वो एक्चुअली में सही था, बट मेरी उनको थोड़ा सा वहां से हट जाने के लिए वो फ्रेडी के ऊपर ये ब्लेम दे दिया. बट एक्चुअली यस, मेरी इज कैरिंग द चाइल्ड. And after the death of Dick, she decides to abort the baby, and the local witch Martha Clay helps her to do so. Now, finally, Tom marries Mary, and later she pines for a child. तो इसके बाद का जो स्टोरी है वो हमने पहले देखा कि Tom marries Mary, but they remain childless, unfortunately, and that is why after some years, Mary pines for a child, and as a result of that, she steals the baby from the local supermarket. Okay. Tom sends Mary to an asylum and convinces her to return the baby. Finally, Tom situation को handle करता है, and Tom has started another affair with his own student Price. Finally, Tom experiences huge losses from every relationship. So that is why Waterland. ठीक है, तो मतलब सभी चीजों में पानी गिर गया, that kind of a thing कि Tom has achieved nothing. Tom finally loses everything. Finally, मतलब financially and mentally he is completely devastated. Okay, so that is the story of Waterland by Graham Swift. It is the most discussed and most famous novel. Okay, चलो नेक्स्ट वर्क पे आते हैं. लास्ट ऑर्डर्स, पब्लिश्ड इन 1996. लास्ट ऑर्डर्स. Okay, so Last Order is a novel which won Booker Prize. That is why it is important. And in 1996, it won Booker Prize, but it was very controversial क्योंकि इसका जो प्लॉट है उसके साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलता है द प्लॉट ऑफ एज आई ले डाइंग बाय विलियम फॉकनर. तो ये बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये सवाल उठाए थे कि वेदर दिस नॉवेल इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ एज आई ले डाइंग और इट इज अ यूनिक पीस रिटन बाय ग्राहम स्विफ्ट. बट उनको बुकर मिला था, दो इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल. ठीक है, तो 1996 बुकर प्राइज विनर लास्ट ऑर्डर्स. एंड यस, दिस नॉवेल वाज इंस्पायर्ड बाय एज आई ले डाइंग, एंड द प्लॉट हैज अ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज विद दिस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर. तो इसका प्लॉट क्या है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ड्रिंकिंग इन पब. तो सेटिंग एक पब में है. जो जब नॉवेल ओपन होता है, देन वी कैन सी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ड्रिंकिंग इन पब, एंड दे आर आल्सो डिस्कसिंग द फैक्ट दैट देयर क्लोज फ्रेंड जैक हैज डाइड ऑलरेडी. तो इसी के ऊपर वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में, एंड दे आर ड्रिंकिंग इन अ पब. नाउ अब एक दूसरे कैरेक्टर, अब इन ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है इसमें से एक कैरेक्टर है रे जॉनसन, हु एक्सप्लेन्स टू लेनी, another character, that Jack's wife Amy wants Ray to scatter Jack's ashes into the sea at Margate. तो रे जॉनसन ये कह रहा है कि जैक्स वाइफ हैज रिक्वेस्टेड हिम टू स्कैटर द एश ऑफ जैक. ये तो एक मतलब कस्टम है कि आफ्टर द डेथ फ्यूनरल एशेस आर कलेक्टेड, जो अर्न में होता था, ग्रिशियन अर्न में, जिसको हम अर्न कहते हैं. तो अर्न में एक्चुअली वही होता है कि कलेक्शन ऑफ फ्यूनरल एशेस, एंड फाइनली उनको एक होली जगह में फेंक दिया जाते हैं. ठीक है, चाहे वो कोई होली रिवर हो, कोई होली अदर प्लेसेस हो. तो एमी रिक्वेस्ट्स रे टू स्कैटर जैक्स एशेस इनटू द सी एट मार्गेट. नाउ जैक्स सन विंस अराइव्स इन अ कार. जब ये डिस्कशन होता है तो विंस वहां पर आते हैं. नाउ विंस कौन है? ही इज द ऑर्फन सन. हिज पेरेंट्स वर किल्ड इन वॉर.
तो जैक का सन था वो, एंड हिज मदर इज ऑल्सो किल्ड, सो ही इज एन ऑर्फन नाउ एंड हिज पेरेंट्स वर किल्ड इन वॉर. नाउ Jack asked Vince to give Ray uh, हाँ, ओके, सो जैक आस्क्ड विंस टू गिव रे सम मनी. तो ये मतलब पहले का चीज है, व्हेन जैक वाज अलाइव. ठीक है, तो तब जैक ने ये रिक्वेस्ट किया था विंस को टू गिव रे सम मनी, एंड प्रोबेबली टू गिव दैट मनी विंस अराइव्ड इन दैट पर्टिकुलर पब. ठीक है, नाउ विंस हैड अ चाइल्डहुड क्रश ऑन लेनीज डॉटर सैली. Lenny's daughter Sally, Vince had a childhood crush, and the whole story is actually narrated in flashback. तो प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि जैक इज ऑलरेडी डेड, एंड उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, एंड उस डिस्कशन के दौरान ये स्टोरी वो लोग रिवील कर रहे हैं, द अदर कैरेक्टर्स, दैट रे जॉनसन सेज दैट इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्कैटर जैक्स एशेज, एंड जैक ने कभी अपने सन को कहा था टू गिव सम मनी टू रे, and after the death of his father, Vince arrives Jack's son. He is now an orphan and he is trying to give that money to Ray Johnson. तो इस टाइप से प्लॉट चलता है, and last orders here actually refers to the last instructions given by Jack, and maybe it also referred to that condition of World War. Okay, तो ये फ्लैशबैक में होल स्टोरी का नरेशन है. चलो नेक्स्ट नॉवेल में आते हैं, द लाइट ऑफ डे, पब्लिश्ड इन 2003. The Light of Day. Now this novel is set in Wimbledon in 1997. तो मेन कैरेक्टर है जॉर्ज. जॉर्ज इज गोइंग टू विजिट द ग्रेव ऑफ बॉब नैश इन पुटने विल सिमेट्री. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, डेथ इज अ रिकरेंट थीम इन ग्राहम स्विफ्ट्स नॉवल. सो जॉर्ज इज गोइंग टू विजिट द ग्रेव ऑफ बॉब नैश इन पुटनी विल सिमेट्री. His beloved Sarah is responsible for his murder. George knows that his beloved Sarah is responsible for his murder. George accounts his involvement in the crime, and Bob's affair with Krishna has come to an end. तो दोनों ही स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रहा है. वन इज द स्टोरी ऑफ जॉर्ज एंड सारा, हाउ सारा किल्ड बॉब नैश, एंड उसके साथ साथ ये स्टोरी भी चल रहा है कि हाउ बॉब नैश created an affair with Krishna who has come to an end. Okay, so that is about Light of Day. अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट नॉवेल ऑफ टुडेज क्लास, जो कि एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है, दैट इज टुमारो, पब्लिश्ड इन 2007. एंड द स्ट्रक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग. टुमारो, तो टुमारो जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इट वाज सेट इन पुटने, लंदन ऑन 16 जून 1995. That is the setting, and it is also an interior monologue addressed by a mother to her children. तो एक ही रात का स्टोरी है. ठीक है, रात में मदर अपने चिल्ड्रन को स्टोरी सुना रहा है, एंड व्हेन द स्टोरी फिनिशेस इट इज डॉन. सो दैट इज व्हाई टुमारो. ओके, तो कैसा स्टोरी वो बता रहे हैं. शी इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ हर ओन लाइफ. सो पीटर एंड हेलेन, दे hastily get married in 1944 when they are below 20 years. They were below 20 years of age. They hastily get married in 1944. Later, Peter joins the Second World War as a soldier, and he spent several years in imprisonment. उनको imprisonment में भी रहना पड़ा. During that time, Helen gives birth to his son Mike, who okay. उसके बाद क्या होता है कि after the war he returns to England and becomes a successful entrepreneurship. So he starts a new job as an entrepreneurship. Now Mike also grows up. Mike becomes a biology student in the University of Sussex. And while studying in that university, he meets a girl, Paula, who is the only daughter of a divorced High Court judge. Okay, now Paula is actually the child of Doggy and Fiona. तो Doggy है जो हाई कोर्ट के जज है, तो and उसके वाइफ Fiona. So Paula is actually the child of Doggy and Fiona. But what happens that Fiona later runs away with another man. That is why divorced. Fiona later runs away with another man, and Doggy remains alone. Now finally Paula is sent to boarding school for her study. कभी वो यूनिवर्सिटी में है, बट अर्लियर ही स्टडीड एट बोर्डिंग स्कूल. तो पॉला अपने स्टोरी बता रहे हैं, एंड शी डेवलप्ड अ रिलेशनशिप विथ माइक. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री इन बायोलॉजी, माइक बिकम्स द एडिटर ऑफ अ साइंस जर्नल,
एंड पॉला बिकम्स द आर्ट डीलर। दोनों ही अलग अलग जॉब ले रहे हैं, वन साइंस जर्नल में, वन आर्ट डीलर के रूप में, ठीक है। बट वेन दे मैरी दे रिमेन चाइल्डलेस एंड गेट्स अ कैट फ्रॉम नेबरहुड एंड नेम्ड इट ऑटिस। तो ये आ सकता है क्वेश्चन में कि ऑटिस नाम का कैट कौन सी नॉवेल में है। सो दैट इज इन टुमारो। So they get a cat from neighborhood and names it Otis. Okay, now finally with some artificial technique, Paula gives birth to twins. After so many years, Paula gives birth to twins and the narration ends on 17th June 1995 at dawn. तो 16th June में narration start हुआ। Paula is now Paula is now the mother and who has almost reached in her 40s। तो वो अपने स्टोरी बता रही है टू हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो रात में स्टोरी बता रहे हैं एंड जब सुबह हुआ तो स्टोरी खत्म हो गया। दैट इज व्हाई टाइटल इज टुमारो एंड द नरेशन बिगिंस ऑन 16th June 1995 and ends on 17th June 1995 at dawn। Okay, so that is about tomorrow। So yes, so these are the major novels of Graham Swift. So please read about all these novels in your own way। तो बेसिकली यही उनके मेजर वर्क्स हैं और जो बुकर प्राइज जिसको मिला था उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में देखकर जाना, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। दोज ऑफ यू हु हैव नॉट जॉइन्ड yet, please join to get notification of all important classes। So tomorrow at 8:30 p.m. we will talk about another important postmodernist writer, that is Martin Amis। Tomorrow we will talk about Martin Amis। Okay, so thank you so much for joining। Good night everyone। Please like, share and subscribe। See you all tomorrow at 8:30 p.m.